हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड. Today we are starting a chapter which name is the flowering of regional cultures. Okay, and before starting the chapter we have to know some important terms. That is Buranjis, that are chronicles in prose tradition of the Ahoms in Assam during the early medieval period. Next is Devdasis, the dancing girls in the temples of South India. Next is folk music. Folk music means music in which people in general take part. Okay, now we will start the chapter. Culture is a way of life. It expresses the way in which a society leads its lives and develop its language, literature, religion, beliefs, customs, etc. and organizes various socio-cultural activities and institutions. It also includes the growth and development of art and architecture. Culture क्या होता है? Culture is a way of life. Okay? कैसे हम रहते हैं? That is mean culture. Fine? कल्चर से हमें पता लगता है किसी भी सोसाइटी का इंटरेस्ट कैसा है, कैसी लैंग्वेज है, कैसी लिटरेचर, रिलीजन, बिलीव्स, कस्टम, सब कुछ पता लगता है हमें सोसाइटी के बारे में. ओके, एंड इंडिया हैज़ अ नंबर ऑफ रीजनल कल्चर्स एंड इवोल्व्ड एंड डेवलप्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ हिस्ट्री. बिकॉज इंडिया बहुत बड़ा है, अलग अलग रिलीजन के लोग रहते हैं, अलग अलग जगह पर रहते हैं, तो यहाँ पर बहुत वास्ट वैरायटी है कल्चर्स की. ओके, तुर्को अफ़गान दिल्ली सल्तनत की जब डिसइंटीग्रेशन हुई 15th सेंचुरी में, तो इंडिया जो है वो अलग अलग इंडिपेंडेंट स्टेट में बट गया था. अगेन जब मुगल रूल की डिसइंटीग्रेशन हुई इन 18th सेंचुरी, फिर से न्यू किंगडम्स इंडिपेंडेंटली अरोज हुए इन महाराष्ट्र, पंजाब एंड राजपुताना, अवध, बंगाल, हैदराबाद. Assam in the northeast was being ruled by Ahoms. Under the new kingdoms in the independent state, religion culture developed differently and in different manner. अब कोई अगर नया किंग बनता है, नया रूल आता है, तो वहाँ का जो कल्चर है वहाँ के लोगों का, वो भी उसी अकॉर्डिंग चेंज हो जाता है. In the present chapter, we shall read about the language, literature, painting, dance and music in India. Okay? Now, topic is regional language and overview. In Indian Constitution, we are having 22 major languages, जिसमें से 13 of which find territorial identification and expression in large political unit states. And the major regional languages include Bengali, Telugu, Marathi, Tamil, Gujarati, Kannada, Malayalam, Odia, Punjabi, Assamese, Konkani, Manipuri and Kashmiri. And order of a number of speakers, it is descending in the order of the number of speakers. okay, यानी सबसे ज़्यादा इंडिया में कौन सी भाषा बोली जाती है? बंगाली, फिर तेलुगु, फिर मराठी. इस तरीके से ये जो लैंग्वेजेस हैं ये फेमस हैं. Indian languages and dialects are grouped into 4 language families. Dialect होता है बोली, एक स्पेशल रीजन के जो लोग बोलते हैं वो क्या होती है? डायलेक्ट. ओके, यानी लोकल लैंग्वेज. नाउ ये अलग अलग फैमिलीज में बटी हुई है. फर्स्ट इज इंडो यूरोपियन, सेकेंड इज द्रविडियन एंड सीनो तिब्बतन एंड द फोर्थ इज एस्ट्रो एशियाटिक. ओके, तो अलग अलग भाषाएं जैसे कि बंगाली, मराठी, गुजराती, उड़िया एंड असमीज, ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? इंडो आर्यन ग्रुप से. फाइन. एंड द्रविडियन लैंग्वेजेस फैमिली इंक्लूड 4 मेजर लैंग्वेज जैसे कि तेलुगु, तमिल, कन्नड़, मलयालम. ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है? द्रविडियन. इस तरीके से हर एक लैंग्वेज जो है अलग अलग फैमिली से बिलोंग करती है. नाउ रीजनल कल्चर्स. अब लैंग्वेज अगर अलग होगी सोसाइटी की, लैंग्वेज रीजन की, तो वहाँ का कल्चर भी क्या होगा? अलग होगा. ओके, जैसे कि फॉर एग्जांपल तमिल भाषा के जो लोग हैं, तमिल स्पीकिंग रीजन, दैट इज तमिलनाडु. जहाँ के लोग तमिल भाषा बोलते थे वो एक रीजन बन गया, दैट इज तमिलनाडु. मलयालम स्पीकिंग रीजन क्या बन गया? केरला. ओके, तो both the languages belong to the Dravidian family. They are written in different scripts and have different literary heritage. दोनों जो भाषाएं हैं जैसे कि मलयालम और तमिल, दोनों ही द्रविडियन फैमिली से बिलोंग करती हैं, लेकिन दोनों का लिखने का तरीका अलग है और दोनों के लिटरेरी हेरिटेज भी अलग है. सिमिलरली
Bengal and Bihar, physically close and closely linked to commerce and administration over centuries, are sharply different in culture, religious orientation and social structure. जैसे कि बंगाल और बिहार दोनों पास पास हैं, लेकिन वहाँ की लैंग्वेज अलग है और बिल्कुल हर तरीके का कल्चर, उनका सोशल कल्चर, सारी चीज़ें क्या हैं, डिफरेंट है. Now next is literature. Every regional language has a rich heritage of literature. The first is Tamil literature. Among the South Indian languages, Tamil has the oldest literature. जितने भी South Indian languages हैं उसमें से Tamil has the oldest literature and it begins around the 1st century AD. The ancient time Tamil literature is known as the Sangam literature. Sangam literature जो कि तमिल literature में सबसे famous है and सबसे oldest है. The twin epics that is Silpakaram, Manimekalai and Tirukural, a collection of aphorisms, were written between 4th and 6th century. Between 6th and 9th century, Bhakti poetry was composed by the Alvar and the Nayanar saints. From the 12th of the 16th century, many philosophical treatises and anthologies of religious legends were composed, as well as the classical writings of the poet Kamban, who translated Ramayana in Tamil. Next is Malayali literature. In Malayalam, the earliest literary work is Ramcharitam, that is late 12th or early 13th century, and Azuthachan, that is Adhyam Ramayan, composed during the first half of the 16th century, is given importance in the same way as Tulsidas Ramayan in North India. जैसे कि North India में तुलसीदास द्वारा रचित रामायण पॉपुलर है, वैसे ही मलयाली भाषा में अध्यात्म रामायण वो बहुत ज़्यादा फेमस है. And Kunjan Nambayar, that is 1705 to 1770, and Unanya Veerapai produced mythological stories. Next is Kannada literature. The earliest records in Kannada literature date back from the 6th century AD. The classical tradition begins with the Kavi Rajamarga of Nirputanga, that is 9th century, and in the 12th century, Vachan, a new form of short blank verse, a poetry, come back, and Nemi Chandra Lilvati, that is 1370, is a earliest novel in Kannada. One of the most famous Kannada works is the Raja Shekhar Vilasa, a fictional tale written by Sadarkarsh Deva in 1657. Next is Telugu literature. Telugu literature began to be written in the 10th or 11th century. It is comprised mainly of poetry and epics. It flourished in the 16th century under the Vijayanagar Empire. Next is Assamese literature. Assamese literature शुरू हुआ था from the 13th century, and the first great Assamese poet was Kaviraj Mahadeva Kandali, that is in 14th century poet, and who translated the Sanskrit Ramayana, wrote Devazit, a narrative on God Krishna. The most famous Assamese poet of the 16th century was Shankaradev, who inspired poets such as Mahavedha to write lyrics of great beauty, and Buranji are chronicles written by the Ahoms of Burma in a prose tradition and brought to Assam. Next is Odia literature. Odia literature, that is Madla Panji text, the chronicles of the Jagannath temple in Puri, is the earliest prose work in Odia, that is in 12th century. During the 14th century, the anonyms Khalsa, Chotisa and the famous Chandi Puran of Sardalasa were composed, and the best known medieval Odia poet was Jagannath Das in the 16th century, who produced a version of the Sanskrit Bhagavata Puran. Next is Marathi literature. Marathi literature, along with Bengali, Marathi is the oldest of the regional literature, dating from about 1000 in the 13th century, and two Brahminical sects, that is Mahanubhav and the Varakari Panth, produced vast quantities.
The latter was associated with Bhakti. It was out of his tradition that Janeshwar, Namdev and Eknath emerged as great names of early Marathi literature. Among the Bhakti poets of Maharashtra, the most famous is Tukaram of 16th century. A unique contribution of the Marathi is the tradition of Povadas, heroic stories popular among the martial people during the time of Shivaji. Now next is paintings. The history of painting in India dates back to Upper Paleolithic period, and paintings from ancient and early medieval India still survive in the wall paintings found at rock cut architecture sites. बहुत पुराने टाइम से ही आप जो पुरानी पेंटिंग्स हैं हमारी वो आप देख सकते हो, जैसे कि रॉक कट टेम्पल्स हैं, वहाँ पर दीवारों पर आप ये पेंटिंग देख सकते हो. These paintings were made on a thin layer of a dry plaster coated over a base of mud, straw and cow dung. From about the 11th century onwards, illustrated manuscripts from western and eastern India survive in fairly large numbers, and these manuscripts were made of palm leaf folios. In the 14th century, paper began to replace palm leaf in illustrated manuscript. पहले सबसे पहले जो थे लोग दीवारों पर बनाते थे मड की या फिर काउ डंग से, ये अलग अलग पेंटिंग बनाते थे. उसके बाद धीरे धीरे पाम लीव्स पर पेंटिंग बनने लगी, स्क्रिप्ट लिखने लगी. लेकिन उसके बाद 14th सेंचुरी में पेपर इंट्रोड्यूस हुआ और पाम लीफ की जगह किसने ले ली? पेपर ने ले ली. ओके. The first example of the Indian painting from a historical period which have survived are the wall paintings from caves 9 and 10 at Ajanta near Aurangabad in Maharashtra dating from the 1st century BC. सबसे पुराना एग्जाम्पल है जो हमारी अजंता की गुफाएं हैं महाराष्ट्र में, वो आप देख सकते हो, वहाँ पर बहुत सुंदर पेंटिंग्स बनी हुई हैं. ओके. The medieval painting style of Eastern India is known from the surviving manuscripts of Buddhist subjects painting in Bihar and Bengal. और अगर medieval period की paintings का आप example देखना चाहते हो तो बिहार और बंगाल में जो बुद्धिस्ट monasteries बनी हुई हैं वहाँ पर आप देख सकते हो. This painting style declined with Islamic dominations of the region in the 13th century, and the Western India style paintings were mostly created in Gujarat. Regional variations of this style are found at Mandu and Gwalior, Madhya Pradesh, and Jaunpur, that is Uttar Pradesh, and Delhi. The most important painting style in India in the early 16th century is known as Chor Panch Shikha group style. Okay. तो ये आप देखो, एंड दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मुगल पेंटिंग. जो मुगल जो एम्परर्स थे वो पेंटिंग के बहुत ज़्यादा शौकीन थे, तो उन्होंने इस टाइप की पेंटिंग्स बनवाई. नेक्स्ट इज मुगल पेंटिंग. The Mughals were great lovers and patrons of art and paintings. The Mughal style of painting developed under the patronage of Akbar. अकबर के टाइम पर ही बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था जो मुगल्स में पेंटिंग का शौक है. ओके. एंड द हमाजनामा इज अ कलेक्शन ऑफ 14 लार्ज स्केल वॉल्यूम पेंटिंग्स. Basavan and Daswant were famous artists during Akbar rule, and during the religion of Jahangir, Mughal style attained great heights of refinement. Main artists in Jahangir region include Bishan Das, Abul Hasan and Manohar, Govardhan, Balchand, Bichitra and Miskin. During the reign of Shah Jahan too, considerable paintings continued to be made. Imperial patronage of paintings began to decline in the reign of औरंगजेब. सिर्फ जब औरंगजेब मुगल किंग बना उस टाइम पर जो पेंटिंग का जो न्यू स्टाइल था वो थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि औरंगजेब इतना ज़्यादा शौकीन नहीं था पेंटिंग का. इन डेक्कन पेंटिंग्स exhibit a blending of Persian and Turkish influences. The main centers of the Deccan styles were Ahmednagar, Bijapur, Golconda and Aurangabad. Now next is Rajput painting. The late 16th and early 17th century saw the rise of regional paintings in Rajasthan and hill states, and so the Rajput paintings can be divided into two parts, that is Rajasthani and Pahadi schools.
The Rajasthani schools of paintings comprise of Bundi, Hadoti, Malwa, Kishangarh and Mewar style. ये आपके क्या है, राजस्थानी स्कूल के सेक्शंस हैं, ओके, रीजन्स हैं. एंड डिपिक्ट कोर्ट सीन्स, रॉयल फेस्टिवल्स, प्रोसेशंस एंड सीन्स ऑफ हंटिंग एटसेट्रा. जो क्या प्रिस्क्राइब करते थे, किस चीज़ की पेंटिंग बनाते थे, किसी दरबार की यानी कोर्ट सीन की, या फिर रॉयल फेस्टिवल जो सेलिब्रेट कर रहे हैं उसको डिपिक्ट करते थे पेंटिंग में, या कोई फेरी जा रही है, प्रोसेशन लोगों का जा रहा है, या फिर सीन्स ऑफ हंटिंग. द पहाड़ी schools of painting, also called the Kangda school of painting, is further divided into various schools. For example, the Kangda, the Basoli and Jasrota, Mandi, Mankot, Nurpur, etc. These paintings depict the devotional love of Radha and Krishna, scenes from the Ramayana, the Mahabharat and mythology. और जो ये पेंटिंग्स हैं पहाड़ी स्टाइल की, ये किस चीज़ को शो करती थी, राधा एंड कृष्णा भगवान के लव को, सीन्स फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत एंड माइथोलॉजी. Okay, so here is an example of the Rajputana style paintings. Now, dances of India. Dance is a performing art. It is a physical expression of inner emotions of telling a story and of drama. Dance क्या होता है, physical expression होता है अपने internal emotions को बताने का. Okay, dance in India can be categorized into three categories, that is classical, folk and modern. Classical dance forms are among the best preserved and oldest practices in प्रेजेंट सेंचुरी. ओके, रॉयल कोर्ट या टेम्पल्स में ये क्या होते थे, ये अभी तक हमने बचा के रखे हैं इस डांस फॉर्म को, दैट इज क्लासिकल डांस फॉर्म. वन बाय वन हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे. क्लासिकल डांस. द चीफ सोर्स ऑफ क्लासिकल डांस इज भरत मुनिज नित्यशास्त्र, a comprehensive treatise on the origin and function of Natya. And there are 6 types of classical dance forms of India, that is Bharatnatyam, Kathak, Kathakali, Kuchipudi, Manipuri and Odissi. तो ये डांस फॉर्म जो है क्लासिकल डांस फॉर्म के फेमस फॉर्म है, जैसे कि भरतनाट्यम है जिसको दासियटम भी कहते हैं, और तमिलनाडु का फेमस फोक डांस है, ये फोक क्लासिकल डांस है, एंड इट एक्सप्रेसेस हिंदू एंड मुस्लिम रिलीजन थीम्स एंड वाज ओरिजिनली एंड एक्सक्लूसिव परफॉर्म्ड बाय देवदासीज, जो कि टेम्पल्स में देवदासी परफॉर्म करती थी. कथक. कथक इज indigenous to northern India and it developed under the influence of both Hindu and Muslim cultures. The dance forms is steeped in the Radha Krishna love lore, and there are 2 styles of Kathak, the Jaipur Gharana and the Lucknow Gharana. उसके बाद है आपका कथकली. कथकली क्या है, कथकली was the originated in Kerala state, and this school is based on a regional text influenced by the Nritya Shastra and later treatise, as themes are mainly from Ramayana, Shiv Puran, Bhagwan Puran and Mahabharat and other religious texts. उसके बाद है कुचिपुड़ी. कुचिपुड़ी कहाँ से शुरू हुआ, कुचिपुड़ी started from the village of कुचिपुड़ी in आंध्र प्रदेश, and मणिपुरी, मणिपुरी फ्रॉम मणिपुर, एंड ओडिसी फ्रॉम ओडिशा, जो कि टेम्पल्स में शुरुआत हुई थी. उसके बाद कोर्ट्स में, जैसे कि रॉयल कोर्ट होते थे, वहाँ पर भी वो फेमस हुआ. नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं फोक डांस की. Indian folk dance have an inexhaustible variety of forms and rhythms. They generally fall into 4 groups, that is social, religious, ritualistic and masked. Among the social folk dances, the Kalyacha of the Konkan coast, Ghumar dance of Rajasthan, Bhangra of Punjab and Bison horn dance of the Murai tribe in Chhattisgarh, etc. are good examples. Some major examples of religious folk dances are Didi and Kala of Maharashtra and Garba of Gujarat. Of the endless variety of ritualistic folk dance, the Karakam dance of Tamil Nadu and the Threatam of Kerala may be given as example. Among as masked folk dance, the Yak dance in the Ladakh region of Kashmir and Chahu of
मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा वर वर्थ मेंशनिंग। इस तरीके से अलग अलग स्टेट के अलग अलग फोक डांसेस हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। ओके, नेक्स्ट इज म्यूज़िक। ओके, म्यूज़िक जो है, इंडिया में म्यूज़िक की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है, चाहे वो लाइफ साइकिल ऑफ लाइफ है, चाहे वो जन्म हुआ है या किसी की डेथ हुई है। सम ट्रेडिशनल गीत होते हैं जो कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग रिचुअल के साथ इंडिया में गाए जाते हैं। इन एडिशन म्यूज़िक हैज़ ऑलवेज एकम्पनी ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, जैसे कि सॉइंग, जब हम बीज बोते हैं उस टाइम पर, या रीपिंग या हार्वेस्टिंग, उस टाइम पर भी अलग अलग गीत गुनगुनाए जाते हैं। म्यूज़िक इज़ डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स, दैट इज़ वोकल एंड इंस्ट्रूमेंटल। और वोकल म्यूजिक जो है वो अगेन टू टाइप का है, क्लासिकल एंड फोक। नाउ व्हाट इज क्लासिकल म्यूजिक? Classical music in India flourished for centuries and exists today as Hindustani music and Carnatic music. During the Sultanate period, the Sufi saints brought music to India, and Amir Khusro was a poet as well as singer. He introduced Qawwali and Tarana in India and created rags. The credit of investing the tabla, sarangi and sitar goes to Khusro and Nayak Gopal, a musician from Deccan. Hindustani music, which evolved during the period, was a combination of the Persian, Arabic and the classical Indian music. The Mughal too were patrons of music. जो मुगल एम्पर थे वो भी म्यूजिक के बहुत ज़्यादा शौकीन थे. There were a number of musicians at Akbar court, where Tansen was the best singer. और अकबर के कोर्ट में बहुत सारे म्यूजिशियंस थे, बहुत सारे सिंगर्स थे, जिसमें से तानसेन बहुत ज़्यादा फेमस हैं. He composed many rags and invented रुद्रवीणा, और उन्होंने बहुत सारे राग कंपोज किए और रुद्रवीणा को भी इन्वेंट किया. बाबा रामदास, बैजू बावरा एंड सूरदास two were famous singers. Next is Carnatic music, flourished largely in Tamil Nadu, Kerala and Andhra Pradesh. In Carnatic music, Kirtis Tirniti, that is Purandara Das and Tyagraj and Muthuswami Dikshitar are mainly rendered. Music in almost all Indian communities used as a means of communicate with the divine. Various forms of music include the Kirtan, Sufi Qawwali, Samaj Parmapara of the Vaishnavites and Shabd Kirtan एंड गुरबानी, गुरमत संगीत एंड जागरन्स. भगवान को डिवोट करने के लिए उनकी भक्ति में भी अलग अलग टाइप के म्यूज़िक जो हैं वो इंडिया में यूज़ किए जाते हैं. द पोइट्री ऑफ सेंट पोइट्स सच एज कबीर, नामदेव, चरणदास, बुले शाह, Baba Farid, etc. is rendered in devotional songs. Besides the above said, there is Sokswami or Dirgi singing in the Majlis during Muharram and Mehlas or chapter in the Adi Granth of 6, Haveli Sangeet, Kirtans, Bhajans, choirs of devotional music, etc. The richness of our musical heritage is best reflected in our folk music. In fact, every region has its own folk music. Different folk music may be distinguished by their composition, words and moods. अलग अलग संगीत हैं जो कि अलग अलग तरीके से कंपोज किए गए हैं, उसमें अलग अलग वर्ड्स, अलग अलग भाषाओं का यूज़ किया गया है और मूड्स पर भी डिपेंड करते हैं. तो म्यूज़िक की इंडिया में बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा स्प्रेड हुआ है और बहुत सारी वेराइटीज़ इंडिया में देख सकते हो. नाउ हियर इज़ अ केस स्टडी अबाउट बंगाल. What about the literature and language of Bengal? Around the year 1000, Bengali language developed along with Odia and Assamese, and the specimen of Old Bengali are found in Charyapad songs written between 950 to 1200 by some Mahayana teachers known as Siddhas, and their themes closely resemble of one of Bhakti saints and reformers. Bengali poetry is mainly written in three distinct genres, that is Mongol Kavya, Mahakavya and Padwali Ramayan by Kirtabas. In the early 15th century is an example of Mahakavya.
Chandidas wrote about 1250 poems about the love of Radha and Krishna in Bengali language, and many consider him as the greatest lyric poet of Bengal prior of Rabindranath Tagore, and earlier Jayadev composed Gita Govind in the 12th century. इस तरीके से बहुत सारे फेमस पोइट हुए हैं जिन्होंने बंगाली लिटरेचर में काफ़ी कुछ लिखा है. नाउ अबाउट द पेंटिंग्स ऑफ बंगाल. The earliest specimen of Bengal paintings are the 12 miniature paintings of the done on palm leaves, and this is a manuscripts of the Buddhist text called Asthasariska and Janja Paramita, which dates back to 983. These paintings are an example and an expression of the Mahayana Buddhism cult, and the art of painting reached a high during the rule of Dharampala, and under his patronage Dhimsa and his son Pitapala emerged as master painters. Now next about the music of Bengal. Till the 18th century, not much was known about the development of music in Bengal. The Charya were the first musical composition. We get an early account of Charya in Sangeet, that is Ratnakar, a musical trended by Sarangdev, who lived in the 13th century. Jayadev, a Bengali poet of the late 12th century, modeled his songs on the immortal love of Radha Krishna in his Geet Govind, which is regarded as the fortuner of the Drupad, and Baru Chandidas' book of songs known as Sri Krishnan Kirtan gave body of Bengali music. Later, Vaishnavite songs greatly contributed to the realm of Indian music, and this was the case study of Bengal कि वहाँ पर कैसे म्यूजिक फ्लोरिश हुआ, कैसे पेंटिंग्स हैं और कैसे वहाँ की लिटरेचर है. ओके, नाउ हियर इज अ क्विक रिकैप ऑफ द चैप्टर अबाउट द लैंग्वेज एंड लिटरेचर. Cultures denotes the way of living. Language, literature, art, architecture, religion, beliefs, customs, rituals, etc. of the society. And the disintegration of the Turko-Afghan Delhi Sultanate and Mughal Empire gave rise to several new kingdom states where regional cultures developed differently. And of the four South Indian languages, the Tamil has the oldest literature known as the Sangam. About the paintings, the art of paintings dates back to Upper Paleolithic period and is preserved in the cave paintings. Ajanta paintings date back to the 1st century BC. The medieval painting style of Eastern India died out with the Islamic domination of the region in the 13th century. And during the Mughal period, paintings developed under the patronage of Akbar and reached its climax during the reign of Jahangir. Now about dances. Dance is a performing art. There are two types of dance in India, classical and folk. Bharatnatyam, Kathak, Kathakali, Kuchipudi, Manipuri and Odissi are classical dances. Folk dances are classified into four types: social, religious, ritualistic and masked. There is an endless variety of folk dances in India. Now about some music. Music is divided into two types, vocal and instrumental. In vocal music there are two main types, classical and folk. The Carnatic music flourished in South Indian states, and the devotional music has various forms, for example Kirtan, Sufi Qawwali, Gurbani, Jagrans, etc. I hope bachcho you have understood the chapter. Read it once again and do the exercise yourself.